Assalamu alaikum नाज़रीन, दिस इज़ रज़ा अहमद एंड यू आर वाचिंग मी एट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलती हूँ। ही इज़ मिस्टर सिराज वलिका। ही इज़ द सन ऑफ मिस्टर नूरुद्दीन वलिका हु इज़ द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वलिका's family. After nationalization, Walika family divided into many businesses like real estate, construction, education, import of steel, commercial kitchen and fabrication. बहुत ही स्टार्ट में वलिका फैमिली ने एक स्टेनलेस स्टील का एक प्लांट लगाया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विद कोऑर्डिनेशन ऑफ निचुमन ऑफ जापान एंड मशीनरी फ्रॉम IHI जापान। सो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज मेंशन किया गया था कि 70 पीपल सिलेक्ट किए गए थे टू बी ट्रेन इन जापान, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। तो आइए मिस्टर सिराज वलिका को वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में और उनसे जानते हैं कि ये जो एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव उन्होंने लिया था ये कहाँ तक जो है वो कामयाब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, प्रीशियस टाइम कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। सो मैं आपसे ये जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया है मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूँगी कि एक स्टेनलेस स्टील और मैन्युफैक्चरिंग स्टील आपने एक बुनियाद रखी और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्लॉजेस आपने मेंशन किए। तो वो कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक आप उसमें कामयाब रहे, प्लीज़ बताइए। स्टेनलेस स्टील का जो प्लांट था इट वाज नोन एज वलिका स्टील वर्क्स and in the early 65 to 70 this was 60% of the machinery was imported and it was lying at the port and being brought to the site, and during that time in the 70 the whole thing was nationalized and this steel mill of ours was still a private property with not coming under the legislation of nationalization. So they are still manufacturing steel nowadays? Yes, they are manufacturing, but the production is very small because of the lack of foreign exchange for import of various chemicals. Okay. And so this is the situation is very bleak for this industry as I see it. Because the foreign exchange reserves do not improve tremendously. The chemicals being used in this plant are quite expensive, and one should keep in mind that this factory was based for defense as well. Why it was based for defense? Because when there was a war between India and Pakistan, we were told by the government to go for manufacturing of steel plates for tanks. सर ये कब की बात बता रहे हैं आप? ऑलमोस्ट कितना? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया। इसलिए टाइम हो गया क्योंकि वो नेशनलाइजेशन के बाद द होल सिस्टम वाज डिस्टर्बटेड। द होल सिस्टम वाज डिस्टर्बटेड एंड नोबडी वाज गोइंग टू टेक केयर ऑफ व्हिच द कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 7 times दिस फैक्ट। Main reason was devaluation of the rupee. First the dollar was 4 rupees, then 10 rupees, and began to climb up. So naturally the feasibility was based on some value of the dollar, and now it was unfeasible at that price of the dollar. But still it could have worked if the intention to run it was there. Okay. So sir, after that आपके क्या फर्दर आगे फ्यूचर प्लान उस टाइम मैं पूछना चाहूँगी कि उस टाइम आपके क्या फ्यूचर प्लान थे फर्दर रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री, क्योंकि आप इतना कुछ ऑब्वियसली आपने फेस किया और आपने फील किया कि उस वक्त ये सब कुछ हुआ, एक आपने बुनियाद रखी उस स्टेनलेस स्टील की, तो फर्दर आपने कुछ इनिशिएटिव लिया इस स्टील इंडस्ट्रीज में? This could have, the product could have gone for nuclear station because the various valves and the pipes used in the connection could be manufactured here, and it would have been great help to Pakistan progress in nuclear field. But unfortunately we lost control of it, and as you know how it is run by the people. I would not like to mention anything, but people know about it.
ओके, वो ये ना बात पर्दे में रहने की कुछ बातें हैं वो उसी में बेहतर होती हैं। ओके, अच्छा फर्दर आपके इंट्रोडक्शन में भी मैंने एक चीज़ मेंशन की कि आपके बिजनेस में भी इंपोर्ट ऑफ स्टील, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व, योर फैमिली इज इन्वॉल्व इन रियल स्टेट एंड इन कंस्ट्रक्शन लाइन, सो बेसिकली उसके लिए आप स्टील को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका बैकग्राउंड भी स्टील मिल से ही था, तो अभी हम करंटली अगर सिचुएशन देखते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉप हो गई है और स्टॉप कर दी गई है। तो जब हम ये स्टील जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं और उससे हम फ़ायदा जो है वो बैरून ममालिक को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली फ़ायदा उनको पहुंच रहा है, तो हम अपने पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हमने एक्सपोर्ट का क्यों नहीं सोचा? उस टाइम अगर स्टील मिल्स पे इतना काम हो रहा था तो एक्सपोर्ट की तरफ भी तो ये इंडस्ट्री जा सकती थी। व्हाई इट इज़ ऑन इम्पोर्ट लेवल? I'd like to pinpoint here that Pakistan Steel was a very good project. It was a fantastic project put up by the Russians at the time of Mr. Zadeh Bhutto. But number one, it was overstaffed. Instead of say 5,000 people, 14,000 people are working there. So that again put up a lot of pressure on steel, Pakistan Steel. What kind of pressure? Because the salary was not what it should have been. It was more for 14,000 people. The 5,000 people could have easily run it. And people who were employed some of them were totally unskilled. They were sort of being given training in that. It was a training ground. But that's okay. But one should have a comprehensive plan in mind. Not just to run the industry for the sake of running it. It should be having a profit to maintain and to have the steam to go ahead. Otherwise, no industry can survive like that. True. So what do you think, sir, कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इसकी डिस्टर्बेंस के पीछे कहीं एक वजह है? What do you think? Pakistan Steel has closed down for a long number of years now, and it is a sad story and sad state of affairs, I would say, because we are importing thousands of tons of CRC sheets, HRC sheets here, and this was being manufactured in Pakistan Steel, and Pakistan Steel was producing billets, and those billets could have been exported, because we had received order or inquiry, you can say, for 10,000 billet shipment in one go and another shipment every month. But that was the situation we could have exploited for the benefit of the country. True. Obviously, we should think about it, no? Obviously, for our country. Nobody, I tell you, it was a very sad state of affairs that I cannot सारी express. फैसिलिटीज सर अपने मुल्क में मौजूद हैं, तो उसको मज़ीद आगे इम्प्रूव करने की बजाय उसको जो है वो नाकामी की तरफ हमारी गवर्नमेंट पहुंचा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है। नेक्स्ट माय क्वेश्चन है कि स्टील में जैसे गैस का एक बहुत मेन रोल होता है सर, तो अगर जैसे कि डॉलर रेट हाई होने की वजह से गैस जो है वो महंगी हो जाती है, तो क्या इसकी कॉस्ट जो है वो कस्टमर को बेयर करनी पड़ती है? बेयर तो करनी पड़ती है, but the demand dies down to some extent because of the costly material. Now, if the steel bars which are used in construction, you sell it say at 100,000 rupees a ton, and suddenly it goes to 150 or 200,000 rupees a ton. The viability of the project is zero, I think. Because where do you stand with that sort of prices? Obviously. And the customers who have booked flats in various buildings or offices, they can't make ends meet at all. Truly agree. So, अगर दूसरी स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टील मैन्युफैक्चर कर रही हैं? They're known as rolling mills. उसका क्या इम्पैक्ट है? They use scrap either from the ship breaking or scrap for melting. They say it's a melting scrap and a rolling scrap. There are two types of scraps. And
they manufacture steel bars, which is used in construction. There are a lot of them factories here in Pakistan, and even in Punjab, Sindh, and Balochistan there is one which I know of. And they make the ends meet, but still the prices have gone up. Because the prices of dollar, the prices of gas, prices of electricity. I don't know what is the policy. Because we might become a nation of shopkeepers instead of being the manufacturers of so many items. We'll become a nation of shopkeepers. This is what I fear for this country. सर जैसे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो जब स्टील जो है वो बिल्डर्स को दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दी जाती है? It depends from customers to customers with the manufacturers, owners, and sometimes if the customer is known to me and I can trust him, I'll give him on credit for a few days or month. Right? It depends on depends upon trust and loyalty and your relationship with the customers. So it totally depends on these criteria. Okay, that's great. सर अगर स्टील मिल जो है वो इससे पहले मैं एक सवाल और करना चाहूँगी, जैसे अभी लास्ट कोविड भी आया और कोविड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, हर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन पे गई, एवरी मार्केट, एवरी इंडस्ट्री. सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में स्टील मिल ज़्यादा उसको फेस करना पड़ा, वो ज़्यादा सर्वाइव हुई है इस मामले में, या आपको लगता है कि सब इंडस्ट्रीज़ में यही सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में? I would say that Pakistan has been very, very lucky that COVID was sort of controlled to a very large extent as compared to other countries. And I would also say that though it has affected the industries because the labours and all like that were constrained not to go to their work, but still the situation was not that bad. The main crunch comes when you have a financial problem. And the financial problem is there. If it is not solved, then you are having a crunch on yourself in making money and to have further expansion in the industry. सर अगर ये स्टील मिल जो है वो दोबारा से वापस उसी कंडीशन में, उसी स्टेज पर दोबारा से बहाल हो जाए, सो व्हाट डू यू थिंक कि दूसरी जो स्टील मिल है उससे कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? Pakistan Steel is a different ball game because no other steel mill exists in Pakistan which has the same product range as what Pakistan Steel has. Only I can think of good rolling mill is Amreli Steel and few of them in Punjab which are very good, but they don't have the same quality or the same facilities what Pakistan Steel has. Pakistan Steel was a project put up by Mr. Bhutto with the Russian aid, and the machinery was also supplied with that by them, but unfortunately, it was overstaffed, it was not what it should have been, and so it went down the drain. And you know what happens when that happens, why it happens, why it goes down the drain. The feasibility was perfect for that factory or for that mill. ओके, यू मीन टू से कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ऑब्वियसली, अदर स्टील मिल पाकिस्तान स्टील मिल का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो इट्सेल्फ जो है वो आप कह रहे हैं कि वो एक ज़बरदस्त जो है वो एक प्रोजेक्ट है. सो इसका कंपटीशन कितना टफ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टील मिल का क्या कंपटीशन है और कितना टफ है? स्टील मिल का कोई कंपटीशन नहीं है सच, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग दिस CRC sheet, HRC sheets in bulk from outside, but not at the moment because of the foreign constraints. And I tell you that if Pakistan Steel is put into operation with sincerity, I would say, so it can work and it can run and can make profit. But the thinking and the sincerity should be there. That's great.
सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी हम स्टॉक मार्केट के चैनल से जो है वो बेसिकली अपना प्रोग्राम कर रहे हैं. सो आप इतने सारे बिजनेस में इन्वॉल्व थे और इनमें माशाल्लाह सो यू हैव एन ह्यूज एक्सपीरियंस और दैट्स वाई आप इतनी ज़बरदस्त बातें जो है वो अपनी एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं. सो हैव यू एवर इन्वॉल्व इन स्टॉक एक्सचेंज? I was involved, but I've left it for about 3 years ago. Okay, so when did you leave and why did you leave? And why I left? Because of religious reason, I would say. Okay. Because we have a different mode of thinking about stocks and of interest taking and making and giving payment on interest. So that's why most of our Bora community, they have not been involved in stocks. कितना अर्सा आप इन्वॉल्व रहे और उस टाइम का क्या आपका एक्सपीरियंस था? That's a good question. I was involved and I used to make money. Yeah. And the first shock I had was in shares of Gillette. And I made, at that time, I still remember 40,000 rupees. And the person, Mr. Javed Karim, introduced me to stocks. The secretary of Karachi Club. And he was kind enough to introduce me and I made money on it. And it kept on rolling. I had good friends who advised me accordingly. तो then ये decision कैसे अचानक से कैसे लिया उसको छोड़ने का और कितना टाइम पर? I left the stocks when the index was about 10,000. And I don't regret it that it jumped to 40,000 because I have my own reason and own satisfaction. Yeah, that's great. It's wonderful talking to you, sir, on different topics. It's a lovely experience. So I just want to know in the last, I want कि आप basically एक message अगर हमारे viewers को देना चाहें regarding anything like currently जो पाकिस्तान की situation चल रही है उसके हवाले से भी, तो हमारी यूथ को भी मैं चाहूँगी कि आपको मैसेज दें प्लस हमारी गवर्नमेंट को प्लीज़. In the end, मैं ये तो कहूँगा कि people do love Pakistan, but they should love and cling to Pakistan. This is what I want. They should not let go of Pakistan, and it will survive, inshallah. It shall. I'm not saying that it has gone to the dogs, but it shall and it will, inshallah. And people should work sincerely for it. This is my real belief, which has been with me since childhood. Because our family of 4 brothers, Mr. Fakhruddin Wali Khan, Najmuddin Wali Khan, Saifuddin Wali Khan, Nuruddin Wali Khan, they were such sincere workers. And they were the entrepreneurs who started all these things. Sincerity is very important towards your country, towards your work, towards yourself. Right, right. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you.